हेलो फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत जनाए मोर चैनल मो एग्जाम साथी को। तो आज आम डिस्कसन करवा मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री रो कंप्लीट गोटे मैराथन टाइप रो वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर पूरा ब्रीफली पूरा डिस्कसन आज करवा 500टा क्वेश्चन रोइबो गोटे आई वीडियो रे आम मैंने मॉडर्न हिस्ट्री रो पाखापाखि 1757 रु और 1947 पर्यंत आम जी क्वेश्चन रही अच्छी तार गोटे ब्रीफली डिस्कसन करवा आपण मैंने आम चैनल रे नुआ आसते आम चैनल को आपण मैंने सब्सक्राइब करूँ आपण मान सांग मान सहित शेयर कर दिंतु जो द्वारा कि आम को मोटिवेशन आम मिल से आपण मैंने आमको हेल्प कले आम मैंने आपण निकट चिर उपकृत हेबु वीडियो पीडीएफ टा आपण मानको मिलिबो हमरो टेलीग्राम ग्रुप रे जाई कि हमरो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन जानतो डिस्क्रिप्शन रे वीडियो रही आसंतो देरी न करी आज वीडियो को आरंभ करबा। तो प्रथमे बैटल ऑफ प्लासी युद्ध केबे होइतिला ना 1757 1757 बैटल ऑफ प्लासी। तापर बैटल ऑफ बक्सर युद्ध सेटा केबे होइतिला ना 1764 1764 मसिया रे बैटल ऑफ बक्सर। तापर ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ट्रीटी केबे होइतिला 1765 1765। तापरे रेगुलेटिंग एक्ट एटा केबे हिथिला ना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तापरे पीट्स इंडिया एक्ट एटा केबे हिथिला ना 1784 पीट्स इंडिया एक्ट केबे हिथिला 1784। तापरे परमानेंट सेटलमेंट एटा केबे हिथिला ना 1793 परमानेंट सेटलमेंट केबे हिथिला ना 1793 1793। तापरे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एटा केबे हिथिला ना 1798 सब्सिडरी अलायंस सिस्टम केबे हिथिला ना 1798। तापरे भेलोरे म्यूटिनी एटा केबे होइथिला ना 1806 1806 मसिया रे भेलोरे म्यूटिनी होइथिला। तापरे चार्टर एक्ट एटा केबे होइथिला 1813 1813 मसिया रे चार्टर एक्ट होइथिला। तापर फर्स्ट एंग्लो सिख वार एटा केबे होइथिला ना 1845 रु 1846 पर्यंत होइथिला 1845 रु 1846 पर्यंत फर्स्ट एंग्लो सिख वार होइथिला। तापर सेकंड एंग्लो सिख वार एटा केबे होइथिला ना 1848 रु 49 पर्यंत 1848 रु 49 पर्यंत सेकेंड एंग्लो सिख वार। तापरे डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से पॉलिसी एटा का अंडर रहिथिला ना डेल हाउसिंग को अंडर रे केबे होइथिला ना 1848 1848 डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से पॉलिसी डेल हाउसी। तापरे चार्टर एक्ट ऑफ 1883 एटा 1833 चार्टर एक्ट 1833। तापरे इंग्लिश एजुकेशन रिजोल्यूशन बाय बेटनिक विलियम बेटनिक करथिले केबे हिथिला एटा 1835 रे हिथिला इंग्लिश एजुकेशन रिजोल्यूशन बाय बेटनिक। तापरे एबोलिशन ऑफ सती एटा मध्ये बाय बेटनिक एटा केबे हिथिला 1829 एबोलिशन ऑफ सती बाय बेटनिक 1829। तापर फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम बॉम्बे टू थेन फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम बॉम्बे टू थेन केबे हिथिला 1853 केबे हिथिला एटा 1853 फर्स्ट रेलवे लाइन बॉम्बे टू थेन। इन व्हिच ईयर वुड्स डिस्पैच टेक्स प्लेस वुड्स डिस्पैच केबे हिथिला ना 1854 हिथिला वुड्स डिस्पैच। विडो रिमैरेज एक्ट एटा केबे हिथिला 1856
1856 रे विडो रिमैरेज एक्ट होइतिला। रिवोल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट होइतिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट केबे होइतिला ना 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट केबे होइतिला ना 1858। इंडियन काउंसिल एक्ट एटा केबे होइतिला ना 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी एटा केबे होइतिला 1833। अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1833। इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे फाउंड होइतिला 1985। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड केबे होइतिला 1885। पार्टीशन ऑफ बंगाल केबे होइतिला 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 1905। स्वदेशी मूवमेंट केबे होइतिला एटा मध्ये 1905 1905। स्वदेशी मूवमेंट 1905। मुस्लिम लीग केबे फाउंड होइतिला 1906 1906 मसिया रे मुस्लिम लीग 1906। सूरत स्प्लिट केबे होइतिला 1907 1907। सूरत स्प्लिट 1907। मिंटो मोरलेल रिफॉर्म्स केबे होइतिला 1909। मिंटो मोरलेल रिफॉर्म्स 1909। तापर गदर पार्टी 1913। गदर पार्टी 1913 1913। तापरे होम रूल लीग एटा केबे होइतिला 1916। होम रूल लीग 1916 1916। लखनऊ पैक्ट 1916 1916। लखनऊ पैक्ट 1916। चंपारण सत्याग्रह केबे होइतिला 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक केबे होइतिला 1918। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918। मोंटागो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स केबे होइतिला 1919। मोंटागो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। राउलाट्स एक्ट केबे होइतिला 1919। राउलाट्स एक्ट 1919 1919। जालियानवाला बाग मैसेकर 1919। जालियानवाला बाग मैसेकर 1919। एटा कोडी एटा अमृतसर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 1920 मसिया रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन जो कहते। चौरी चौरा इंसिडेंट 1922। चौरी चौरा इंसिडेंट 1922। स्वराज पार्टी 1923। स्वराज पार्टी 1923 1923। साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928। लाहौर सेशन 1929। लाहौर सेशन 1938। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। दांडी मार्च 1930। दांडी मार्च 1930। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 1930। गांधी इरविन पैक्ट 1931। गांधी इरविन पैक्ट 1931। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। पूना पैक्ट 1932। पूना पैक्ट 1932 1932। कम्युनल अवार्ड 1932। कम्युनल अवार्ड 1932।
गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, कांग्रेस मिनिस्ट्री formed 1937, कांग्रेस मिनिस्ट्री formed 1937, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, ऑगस्ट ऑफर 1914, ऑगस्ट ऑफर 1940, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940, 1940, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940, 1940, क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 1942, 1942, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942, 1942, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942, इंडियन नेशनल आर्मी रिकॉग्नाइज्ड अंडर सुभाष बोस, एटा केबे 1943, इंडियन नेशनल आर्मी recognized under Subhash Chandra Bose 1943, Weibull Plan and Simla Conference 1945, Weibull Plan and Simla Conference 1945, Cabinet Mission 1946, Cabinet Mission 1946, Interim Government 1946, Interim Government 1946, Royal Indian Navy Revolt 1946, Royal Indian Navy Revolt 1946, Mountbatten Plan 1947, Mountbatten Plan 1947, Indian Independence Act 1947, Indian Independence Act 1947, Battle of Plassey को ब्रिटिश अंडर रे होइथिला, रॉबर्ट क्लाइव, बैटल ऑफ प्लासी को ब्रिटिश पावर अंडर रे होइथिला ना रॉबर्ट क्लाइव को अंडर रे, व्हिच एसोसिएट विथ नवाब इंस्टॉल्ड बैटल प्लासी रे राजा किए थिले मीर जाफर, बैटल प्लासी रे राजा किए थिले मीर जाफर, बैटल बक्सर रे नवाब राजा जे कि डिफिट होते मीर कासिम, बक्सर बैटल ऑफ बक्सर डिफिट होते राजा मीर कासिम, बैटल ऑफ बक्सर रे ब्रिटिश कमांडर किए थिले हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर रे ब्रिटिश कमांडर किए थिले हेक्टर मुनरो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हास्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हास्टिंग्स, परमानेंट सेटलमेंट एंड सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट एंड सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लॉर्ड कॉर्नवालिस, सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेल्सली, सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेल्सली, एबोलिशन ऑफ सती एंड लिबरल रिफॉर्म्स लॉर्ड विलियम बेटनिक, एबोलिशन ऑफ सती and liberal reforms Lord William Bentinck, doctrine of Lapse and railway or telegraph expansion Lord Dalhousie, doctrine of Lapse and railway or telegraph expansion Lord Dalhousie, last Governor General and first Viceroy of India Lord Canning, last Governor General and first Viceroy of India लॉर्ड कार्निंग, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दिल्ली दरबार रे जोटा कि 1877 रे हिथिला सेडारे किए एसोसिएट हेथिले लॉर्ड लिटियन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दिल्ली दरबार रे हिथिला 1877 रे किए एसोसिएट होइथिले लॉर्ड लेटन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अल्बर्ट बिल रे किए एसोसिएट होइथिले लॉर्ड रिपन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आउ अल्बर्ट बिल रे किए एसोसिएट होइथिले लॉर्ड रिपन, पार्टीशन ऑफ बेंगल एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे रे किए एसोसिएट होइथिले लॉर्ड कर्जन, पार्टीशन ऑफ बेंगल आर्कियोलॉजिकल सर्वे रे एसोसिएट होइथिले लॉर्ड कर्जन, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली बाय
Lord Hardinge to Kolkata transfer of capital from Kolkata to Delhi associated किए ना Lord Hardinge to Montagu Chelmsford reform by associate किए थिले Lord Chelmsford Montagu Chelmsford reforms associate किए थिले Lord Chelmsford गांधी यूरोइन पैक्ट रे एसोसिएट किए थिले लॉर्ड इरविन गांधी इरविन पैक्ट रे एसोसिएट किए थिले लॉर्ड इरविन वाइसरॉय ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट किए एसोसिएट हुए थिले लॉर्ड लिनलिथ गो वाइसरॉय ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट किए एसोसिएट हुए थिले लॉर्ड लिनलिथ गो एसोसिएट विथ वेबल प्लान रे किए एसोसिएट हुए थिले लॉर्ड वेबल प्लान रो एसोसिएट लॉर्ड वेबल लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन पूना पैक्ट आउ शेड्यूल कास्ट पॉलिटिक्स किए एसोसिएट करथिला B.R. आंबेडकर पूना पैक्ट एंड शेड्यूल कास्ट पॉलिटिक्स किए एसोसिएट करथिला B.R. आंबेडकर चंपारण नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसओबीडियंस क्वाइट इंडिया एडा किए एसोसिएट करथिला महात्मा गांधी चंपारण नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसओबीडियंस एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट एडा किए एसोसिएट करथिला महात्मा गांधी नेशनलिज्म एंड होम रूल लीग एडा किए एसोसिएट करथिला बाल गंगाधर तिलक नेशनलिज्म आउ होम रूल लीग किए एसोसिएट करथिला बाल गंगाधर तिलक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किए एसोसिएट करथिला गोपाल कृष्णा गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किए एसोसिएट करथिला गोपाल कृष्णा गोखले ड्रेन थ्योरी एंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादाबाई नरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किए दादाबाई नरोजी तांको द्वारा ड्रेन थ्योरी होइतिला लाल बाल पाल रो एसोसिएट किए करथिले बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल को एसोसिएट करथिले किए बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल रो मीनिंग होची लाल बहादुर शास्त्री बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल ए तीन जन ना होची लाल बाल पाल आ एडा एसोसिएट करथिले एडा बिपिन चंद्र पाल पंजाबी केसरी का कहते लाल लाजपत राय जोटा कि लाल बाल पाल अच्छी पंजाबी केसरी किए लाल लाजपत राय हु एसोसिएटेड विथ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म वंदे मातरम जर्नल किए एडा अरविंद घोष वंदे मातरम जनरल अरविंद घोष वंदे मातरम जनरल अरविंद घोष आईएनए एंड फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस एसोसिएट करथिले आईएनए और फॉरवर्ड ब्लॉक के एसोसिएट करथिले सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन इंटरिम गवर्नमेंट का द्वारा जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन इंटरिम गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू बरडोली सत्याग्रह एटा किए सरदार वल्लभ भाई पटेल बरडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल सीआर फॉर्मूला सी राजा गोपालाचारी सीआर फॉर्मूला बाय सी राजा गोपालाचारी होम रूल लीग और थियोसॉफिकल मूवमेंट किए एसोसिएट करथिले एनी बेसेंट होम रूल लीग और थियोसॉफिकल मूवमेंट एनी बेसेंट मुस्लिम लीग लीडरशिप एंड पाकिस्तान डिमांड मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग लीडरशिप और पाकिस्तान डिमांड मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग 1942-46 मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस प्रेसिडेंट फ्रॉम 1942-46 एडा मौलाना अबुल कलाम आजाद खुदाई खिदमतगार मूवमेंट खान अब्दुल गफर खान खुदाई खिदमतगार मूवमेंट खान अब्दुल गफर खान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह
Revolutionary Movement HSRA Chandrasekhar Azad. Revolutionary Movement HSRA Chandrasekhar Azad. Kakori Conspiracy Ram Prasad Bismil. Kakori Conspiracy by Ram Prasad Bismil. Chittagong Armory Raid Surya Sen. Chittagong Armory Raid Surya Sen. Assassination of Mikhail Odoer Udham Singh. Assassination of Mikhail Odoer Udham Singh. Revolt of 1857 Jhansi Rani Lakshmi Bai. Revolt of 1857 in Awadh Begum Hazrat Mahal. Revolt of 1857 Awadh Begum Hazrat Mahal. Jhansi Rani Lakshmi Bai. Revolt of 1857 Bihar Kunwar Singh. 1857 revolt रे बिहार कुनवार सिंह. 1857 गुएरेला वारफेयर रे तानिया टॉप. गुएरेला वारफेयर रे तानिया टॉप. बैरकपुर इंसिडेंट बिफोर 1857 रिवोल्ट मंगल पांडे द्वारा. बैरकपुर इंसिडेंट बिफोर द 1857 रिवोल्ट बाय मंगल पांडे. ब्राह्मण समाज राजा राममोहन राय फाउंडर. ब्राह्मण समाज रो फाउंडर राजा राममोहन राय. ब्राह्मण समाज केबे फाउंड होइतिला 1822. ब्राह्मण समाज फाउंड होइतिला 1822. ब्राह्मण समाज कोडी फाउंड होइतिला कोलकाता. ब्राह्मण समाज कोडी फाउंड होइतिला कोलकाता. आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती. आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती. आर्य समाज 1875. आर्य समाज 1875. आर्य समाज कोडी बॉम्बे. आर्य समाज कोडी फाउंड होइतिला बॉम्बे. रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद. रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद. रामकृष्ण मिशन केबे फाउंड होइतिला 1897. रामकृष्ण मिशन के फाउंड होइतिला 1897. रामकृष्ण मिशन कोडी फाउंड होइतिला बेलूर और कोलकाता. रामकृष्ण मिशन फाउंड होइतिला बेलूर कोलकाता. प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग. प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग. प्रार्थना समाज कोडी होइतिला केबे होइतिला 1867. प्रार्थना समाज 1867. प्रार्थना समाज कोडी होइतिला बॉम्बे. प्रार्थना समाज कोडी होइतिला बॉम्बे. सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडर गोपाल कृष्ण गोखले. सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले. सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी केबे फाउंड होइतिला 1905. सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंड होइतिला 1905. सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कोडी फाउंड होइतिला पुणे. सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी कोडी फाउंड होइतिला पुणे. थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया आनी बेसंत एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी बाय आनी बेसंत. हाउ अदर थियोसॉफिकल सोसाइटी केबे 1879. थियोसॉफिकल सोसाइटी केबे 1879. थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंड कोडी फाउंड करा जायछि आद्यार रे. थियोसॉफिकल सोसाइटी कोडी फाउंड होइतिला सेंटरटा आद्यार. इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडर ए हो ह्यूमे एंड इंडियन लीडर. इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फाउंडर ए हो ह्यूमे. इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड 1885. इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड इन 1885. इंडियन नेशनल कांग्रेस कोडी फाउंड होइतिला बॉम्बे. इंडियन नेशनल कांग्रेस कोडी फाउंड होइतिला बॉम्बे. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कोडी किए फाउंड करथिला ना आगा खान
नवाब सिलेमुल्ला और अदर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किए फाउंड करथिले ना आगा खान नवाब सलीमुल्ला। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केबे फाउंड होइथिला 1906 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906। where was the all India Muslim League found? कोडी ढाका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कोडी फाउंड होइथिला ढाका थारे। Who founded or helped found the Home Rule League of Tilak? होची बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग ऑफ तिलक होची बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग ऑफ तिलक केबे फाउंड होइथिला 1916। होम रूल लीग केबे फाउंड होइथिला 1916 1916। होम रूल लीग तिलक कोडी फाउंड होइथिला महाराष्ट्र एंड कर्नाटक रीजन। होम रूल लीग कोडी फाउंड होइथिला महाराष्ट्र और कर्नाटक रीजन। होम रूल लीग ऑफ आनी बेसंत। होम रूल लीग का द्वारा फाउंडर आनी बेसंत। होम रूल लीग केबे फाउंड होइथिला 1916 1916। होम रूल केबे फाउंड होइथिला होम रूल लीग के फाउंड होइथिला 1916 1916। होम रूल लीग कोडी फाउंड होइथिला माड्रास ठारे। होम रूल लीग कोडी फाउंड होइथिला माड्रास ठारे। स्वराज पार्टी सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी फाउंड इन 1923। स्वराज पार्टी फाउंड इन 1923। स्वराज पार्टी कोडी फाउंड होइथिला इलाहाबाद। स्वराज पार्टी फाउंड कोडी होइथिला इलाहाबाद। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस को द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस को द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक केबे फाउंड होइथिला 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक कोडी फाउंड होइथिला कलकत्ता। फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंड होइथिला कलकत्ता। गदर पार्टी लाला हरदयाल सोहन सिंह बखना। गदर पार्टी लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह बखना। गदर पार्टी केबे फाउंड होइथिला 1913। गदर पार्टी 1913। गदर पार्टी सेंटर कोडी सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी सेंटर कोडी सैन फ्रांसिस्को। इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एड फाउंडर चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह एंड एसोसिएट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडर होचंती चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन केबे फाउंड होइथिला 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंड इन 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन सेंटर होची दिल्ली। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन सेंटर होची दिल्ली। हु फाउंडेड और हेल्प्ड फाउंड द खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफर खान। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफर खान। खुदाई खिदमतगार केबे फाउंड होइथिला 1929। खुदाई खिदमतगार फाउंड होइथिला 1929। खुदाई खिदमतगार कोडी सेंटर ना नॉर्थ वेस्ट ऑफ फ्रंटियर प्रोविंस। खुदाई खिदमतगार रो सेंटर होची नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ऑल इंडिया हरिजन संघ महात्मा गांधी। ऑल इंडिया हरिजन संघ बाई महात्मा गांधी। ऑल इंडिया हरिजन संघ फाउंडेड इन 1932।
ऑल इंडिया हॉरिजन संघ फाउंडेड इन 1932 ऑल इंडिया हॉरिजन संघ कोडी फाउंड होइथिला पुना ऑल इंडिया हॉरिजन संघ कोडी फाउंड होइथिला पुना इंडियन एसोसिएशन फाउंडर होची सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन रो फाउंडर होची सुरेंद्रनाथ बनर्जी आउ आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड इन 1876 इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड इन 1876 इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड और सेंटर्ड होची कोलकाता इंडियन एसोसिएशन को कोडी फाउंड करा जायतिला ना कोलकाता चंपारण सत्याग्रह केबे होइतिला 1917 चंपारण सत्याग्रह 1917 चंपारण सत्याग्रह मेन इश्यू कौन थिला इंडिगो पीजेंट ऑफ बिहार चंपारण सत्याग्रह रो मेन इश्यू कौन थिला इंडिगो पीजेंट ऑफ बिहार चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी खेड़ा सत्याग्रह 1918 1918 खेड़ा सत्याग्रह 1918 खेड़ा सत्याग्रह मेन इश्यू टैक्स रिलीफ फॉर peasant ऑफ गुजरात खेड़ा सत्याग्रह मेन इश्यू ड्यू टू टैक्स रिलीफ फॉर peasant of Gujarat who lead was closely associated with खेड़ा सत्याग्रह गांधी सरदार पटेल लोकल लीडर खेड़ा सत्याग्रह रो लीडर जाक होचंती गांधी सरदार पटेल लोकल लीडर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक केबे 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक केबे 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक मेन इश्यू प्लेग बोनस एंड वेज डिस्प्यूट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कंपेन प्लेग बोनस एंड वेज डिस्प्यूट who led was closely associated with Ahmedabad mill strike महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक रे क्लोजली एसोसिएट होइथिले महात्मा गांधी when did the non cooperation movement occur 1920 ରୁ 22 non cooperation movement occur केबे ना 1920 ରୁ 22 पर्यंत what was the main issue of non cooperational movement boycott British instruction after Revolts Act and खिलाफत issue non cooperation movement main issue कौन पाई हला ना boycott of British influence after Revolts Act and खिलाफत issue who led or was closely associated with non cooperation movement महात्मा गांधी associated with non-cooperation movement. Civil disobedience movement occurred in 1930. Civil disobedience movement occurred in 1933 to 34. What was the main issue of civil disobedience movement? Defiance of salt law and other colonial laws. Main issue of civil disobedience movement was defiance of salt law and other colonial law. Who led civil disobedience movement? Mahatma Gandhi. Led by Mahatma Gandhi is civil disobedience movement. Dandi March 1930. Dandi March 1930. Dandi March main issue salt satyagraha from Sabarmati Dandi. Dandi March main issue hochi salt satyagraha from
साबरमती टू दांडी। दांडी मार्च महात्मा गांधी। बरडोली सत्याग्रह 1928। बरडोली सत्याग्रह 1928। बरडोली सत्याग्रह मेन इश्यू होची रेवेन्यू एनचेंटमेंट ऑफ बरदोली तालुका। बरदोली सत्याग्रह रेवेन्यू एनचेंटमेंट इन बरदोली तालुका। बरदोली सत्याग्रह रे लीड किए करथिले सरदार वल्लभ भाई पटेल। बरदोली सत्याग्रह लीड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वाइट इंडिया मूवमेंट केबे 1942। क्वाइट इंडिया मूवमेंट केबे 1942। क्वाइट इंडिया मूवमेंट मेन इश्यू कौन भाई हला ना ब्रिटिश विथड्रॉल फ्रॉम इंडिया। क्वाइट इंडिया मूवमेंट मेन इश्यू रहिला ब्रिटिश विथड्रॉल फ्रॉम इंडिया। क्वाइट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी एंड कांग्रेस। क्वाइट इंडिया मूवमेंट क्लोजली लीड करथिले महात्मा गांधी एंड कांग्रेस। स्वदेशी मूवमेंट केबे हिथिला ना 1905। स्वदेशी मूवमेंट 1905। स्वदेशी मूवमेंट एंटी पार्टीशन एजिटेशन इन बेंगाल एडा होचे मेन। स्वदेशी मूवमेंट कम आइथिला एंटी पार्टीशन एजिटेशन इन बेंगाल। स्वदेशी मूवमेंट रो लीडर के नेशनल लीडर ऑफ बेंगाल। स्वदेशी मूवमेंट को के लीड करथिले नेशनल लीडर्स ऑफ बेंगाल। होम रूल मूवमेंट ओक्योर इन 1916। होम रूल मूवमेंट 1916। मेन इश्यू ऑफ द होम रूल मूवमेंट होची सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। होम रूल मूवमेंट रो मेन इश्यू होची सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर। होम रूल मूवमेंट को किए लीड करथिले तिलक एंड एनी बेसंत। होम रूल मूवमेंट को किए लीड करथिला तिलक आउ एनी बेसंत। इंडिविजुअल सत्याग्रह केबे हिथिला 1940। इंडिविजुअल सत्याग्रह केबे 1940। मेन इश्यू इंडिविजुअल सत्याग्रह होची लिमिटेड एंटी वार प्रोटेस्ट। मेन इश्यू ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह होची लिमिटेड एंटी वार प्रोटेस्ट। इंडिविजुअल सत्याग्रह लेड बाय विनोबा भावे was the first सत्याग्रही। इंडिविजुअल सत्याग्रह लेड किए करथिले ना विनोबा भावे वाज फर्स्ट सत्याग्रही। खिलाफत मूवमेंट 1919 टू 24। खिलाफत मूवमेंट केबे केबे 1919 टू 24 1924। What was the main issue of खिलाफत मूवमेंट? डिफेंस ऑफ द ऑटोमन कैलिफेट। खिलाफत मूवमेंट रो मेन इश्यू होची डिफेंस ऑफ द ऑटोमन कैलिफेट। खिलाफत मूवमेंट लीड की करथिला अली ब्रदर्स एंड इंडियन मुस्लिम लीडर्स। खिलाफत मूवमेंट को के लीड करथिला अली ब्रदर्स एंड इंडियन मुस्लिम पीपल लीडर्स। द चीफ प्रोविजन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होची क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे कौन हला ना क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट जनरल ऑफ बेंगाल। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 होची एस्टाब्लिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओवर कंपनीज एफआईआर। पीट इंडिया एक्ट 1784 होची एस्टाब्लिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओवर कंपनी एफआईआर। चार्टर एक्ट 1813 होची एंडेड कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। चार्टर एक्ट 1813 होची एंडेड कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। चार्टर एक्ट 1833 होची मेड गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चार्टर एक्ट 1833 होची
made Governor General of Bengal the Governor General of India. Charter Act 1853 introduced open competition principle for civil services. Charter Act 1853 होची introduced open competition principle for civil services. Government of India Act 1858 होची transferred rule from East India Company to the Crown. Government of India Act 1858 होची transferred rule from East India Company to the Crown. Indian Council Act 1861 introduced Indians in legislative council and portfolio system. Indian Council Act 1861 होची introduced Indian in legislative counseling and portfolio system. Indian Council Act 1892 होची allowed indirect election element and budget discussion. Indian Council Act 1892 होची allowed indirect election element and budget discussion. Indian Council Act 1909 होची introduced separate electorate for Muslim. Indian Council Act 1909 होची introduced separate electorates for Muslim. Government of India Act 1919 होची introduced diarchy in provinces. Government of India Act 1919 होची introduced diarchy in provinces. Government of India Act 1935 होची introduced provisional autonomy and proposal federation. Government of India 1935 होची introduced provisional autonomy and proposed federation. Indian Independent Act 1947 होची created India and Pakistan independent dominions. India Independence Act 1947 होची created India and Pakistan होची independent dominions. Vernacular Press Act 1870 होची restricted the Indian language press. Vernacular Press Act 1878 होची restricted the Indian language press. Arms Act 1878 होची restricted possession of arms by Indians. Arms Act 1878 होची restricted possession of arms by Indians. Revolts Act 1919 होची allowed detention without trial. Revolts Act होची 1919 होची allowed detention without trial. Albert Bill 1833 होची proposed trial of European by Indian judges. Albert Bill 1883 होची proposed trial of European by Indian judges. Widow Remarriage Act 1856 होची legalized Hindu widow remarriage. Widow Remarriage Act 1856 होची legalized Hindu widow remarriage. Sathi Regulation 1829 होची abolished Sathi in British Indian territories. Sathi Regulation 1829 होची abolished Sathi in British India territory. Who wrote Poverty and Un-British Rule in India? दादाभाई नारोजी. Poverty and British Rule in India किए लिखिला? दादाभाई नारोजी. The Indian War of Independence किए लिखिला? B.D. Savarkar. The Indian War of Independence किए लिखिला? B.D. Savarkar. हिंद स्वराज किए लिखिला? महात्मा गांधी. हिंद स्वराज किए लिखिला? महात्मा गांधी. आनंद मठ किए लिखिला? बंकिम चंद्र चटर्जी. आनंद मठ किए लिखिला? बंकिम चंद्र चटर्जी. नील दर्पण किए लिखिला? दीनबंधु मित्र. नील दर्पण किए लिखिला? दीनबंधु मित्र. गुलामगिरी किए लिखिला? ज्योतिबा फुले. गुलामगिरी किए लिखिला? ज्योतिबा फुले. सत्यार्थ प्रकाश किए लिखिला? स्वामी दयानंद सरस्वती. सत्यार्थ प्रकाश किए लिखिला? स्वामी दयानंद सरस्वती. ए नेशन इन मेकिंग किए लिखिला?
सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए नेशन इन मेकिंग के लिखिला सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिखिला जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिखिला जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लिखिला जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लिखिला जवाहरलाल नेहरू। इंडियन स्ट्रगल के लिखिला सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल के लिखिला सुभाष चंद्र बोस। अनहैप्पी इंडिया के लिखिला लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लिखिला लाला लाजपत राय। न्यू इंडिया के लिखिला एनी बेसेंट। न्यू इंडिया के लिखिला एनी बेसेंट। द आर्टिक होम इन द वेदास के लिखिला बाल गंगाधर तिलक। द आर्टिक होम इन वेदास के लिखिला बाल गंगाधर तिलक। What Congress and Gandhi have done to the untouchables? এটা কি লিখিলা B.R. Ambedkar। What Congress and Gandhi have done to the untouchables কি লিখিলা B.R. Ambedkar। न्यूज़पेपर जर्नल केसरी को लीडर ग्रुप लिखिथिले ना बाल गंगाधर तिलक। केसरी न्यूज़पेपर रो लीडर होती बाल गंगाधर तिलक। मराठा न्यूज़पेपर जर्नल रो लीडर ग्रुप होती बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठा रो लीडर ग्रुप होती बाल गंगाधर तिलक। अमृता बजार पत्रिका एडा किए शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। अमृता बाजार पत्रिका एडा किए शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। द हिंदू एडा किए जी सुब्रमण्य अय्यर एंड अदर्स। द हिंदू एडा किए जी सुब्रमण्य अय्यर। यंग इंडिया एडा किए लिखिथिला महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। हरिजन महात्मा गांधी। हरिजन महात्मा गांधी। आल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद। आल हिलाल जर्नल भाई मौलाना अबुल कलाम आजाद। वंदे मातरम एटा किए अरविंद घोष। वंदे मातरम अरविंद घोष। द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1885 बॉम्बे सेशन रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रे प्रेसिडेंट किए थिले WC बनर्जी। 1885 बॉम्बे सेशन रो इंडियन नेशनल कांग्रेस रे प्रेसिडेंट किए थिले ओमेन चंद्र बनर्जी। 1885 बॉम्बे कांग्रेस सेशन कहीं इम्पोर्टेंट ना फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1905 बनारस सेशन रे इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट थिले गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 बनारस सेशन रे इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट थिले गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 बनारस कांग्रेस सेशन कौन पर इम्पोर्टेंट ना सपोर्ट ऑफ स्वदेशी ड्यूरिंग बेंगाल एजिटेशन। 1905 बनारस कांग्रेस सेशन इम्पोर्टेंट कौन पर ना सपोर्ट ऑफ फॉर स्वदेशी ड्यूरिंग बेंगाल एजिटेशन। 1906 कोलकाता सेशन होची इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट किए थिले दादा भाई नारोजी। 1906 कोलकाता सेशन रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंट किए थिले दादा भाई नारोजी। 1906 कोलकाता कांग्रेस सेशन रो कौन पर इम्पोर्टेंट ना स्वराज वाज डिक्लेयर एज द गोल। कोलकाता कांग्रेस सेशन 1906 कौन पर इम्पोर्टेंट ना स्वराज वाज डिक्लेयर एज द गोल। 1907 सूरत सेशन रे INC रो
प्रेसिडेंट होची रास बिहारी घोष 1907 सूरत सेशन रे प्रेसिडेंट होचंती रास बिहारी घोष। सूरत कांग्रेस सेशन 1907 रे कौन पे इंपोर्टेंट ना स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट 1907 सूरत कांग्रेस सेशन इंपोर्टेंट ड्यू टू स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। 1916 लखनऊ सेशन प्रेसिडेंट थिले अंबिका चरण मजुमदार 1916 लखनऊ सेशन रे प्रेसिडेंट थिले अंबिका चरण मजुमदार। 1916 लखनऊ कांग्रेस सेशन रे कौन पे इंपोर्टेंट लखनऊ पैक्ट विथ मुस्लिम लीग। लखनऊ कांग्रेस 1916 इंपोर्टेंट ड्यू टू लखनऊ पैक्ट विथ मुस्लिम लीग। 1917 कोलकाता सेशन रे प्रेसिडेंट आनी बेसेंट 1917 कोलकाता सेशन रे प्रेसिडेंट आनी बेसेंट। 1917 कोलकाता कांग्रेस सेशन इंपोर्टेंट ड्यू टू फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1917 कोलकाता कांग्रेस सेशन इंपोर्टेंट ड्यू टू फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1920 नागपुर सेशन प्रेसिडेंट थिले सी विजय गवाचारियर 1920 नागपुर सेशन रे प्रेसिडेंट सी विजय राघवाचार्यर। 1920 नागपुर कांग्रेस सेशन इंपोर्टेंट कंपाइन कांग्रेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस 1920 नागपुर कांग्रेस सेशन इंपोर्टेंट कंपाइन कांग्रेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। हु प्रिसाइडेड ओवर 1924 बेल्जियम सेशन महात्मा गांधी 1924 बेल्जियम सेशन रे प्रेसिडेंट थिले महात्मा गांधी। 1924 बेल्जियम कांग्रेस सेशन इंपोर्टेंट कंपाई ना ओनली कांग्रेस सेशन प्रेसिडेंट प्रिसाइडेड ओवर गांधी। 1924 बेल्जियम कांग्रेस सेशन इंपोर्टेंट कंपाई ना ओनली कांग्रेस सेशन प्रिसाइडेड ओवर गांधी। 1929 लाहौर सेशन प्रेसिडेंट थिले जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर सेशन प्रेसिडेंट थिले जवाहरलाल नेहरू। 1929 लाहौर सेशन इंपोर्टेंट कंपाइन पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन इंपोर्टेंट ड्यू टू पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन। 1939 कराची सेशन प्रेसिडेंट किए थिले वल्लभ भाई पटेल। 1931 कराची सेशन प्रेसिडेंट किए थिले वल्लभ भाई पटेल। 1931 कराची कांग्रेस सेशन रे फंडामेंटल इंपोर्टेंट थिला जे फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम रिजोल्यूशन 1931 कराची कांग्रेस सेशन कौन पे इंपोर्टेंट थिला ना फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम रिजोल्यूशन। हु लीड रिवोल्ट ऑफ 1857 एट दिल्ली बहादुर शाह जफर। रिवोल्ट ऑफ 1857 एट दिल्ली होची बहादुर शाह जफर। रिवोल्ट ऑफ 1857 दिल्ली तक कौन कहा जाए ना सिंबॉलिक एम्परर एंड रालिंग फिगर। रिवोल्ट ऑफ 1857 दिल्ली को कौन कहा जाए ना सिंबॉलिक एम्परर एंड रालिंग फिगर। रिवोल्ट 1857 कानपुर को किए लीड करथिला नाना साहेब। रिवोल्ट 1857 कानपुर रे किए लीड करथिला ना नाना साहेब। रिवोल्ट 1857 लखनऊ रे किए लीड करथिला ना बेगम हजरत महल। 1857 रिवोल्ट रे लखनऊ ठारे किए करथिले लीड ना बेगम हजरत महल। 1857 झांसी ठारे किए करथिला रानी लक्ष्मीबाई। 1857 झांसी ठारे किए थिल करथिला रानी लक्ष्मीबाई। बरेली ठारे किए करथिला खान बहादुर खान। 57 रिवोल्ट बरेली ठारे किए करथिला ना खान बहादुर खान। बिहार और जगत सिंहपुर रे किए लीड करथिला 1857 रिवोल्ट को ना कुनवार सिंह। 1857 रिवोल्ट
बिहार जगतसिंहपुर किए करथिला कुनवार सिंह। फैजाबाद ऑफ 1857 रिवोल्ट किए करथिला मौलवी अब्दुल्ला शाह। फैजाबाद 1857 रिवोल्ट किए करथिला मौलवी अहमदुल्ला शाह। ग्वालियर 1857 रिवोल्ट किए करथिला तांटिया टॉप एंड रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर रे रिवोल्ट 1857 किए लीड करथिला तांटिया टॉप और रानी लक्ष्मीबाई। Which European power first reached India by sea? Modern period रोची the Portuguese. European power first reached in India होची Portuguese। 1948 रे कोलकाता रे किए रिच करथिला ना भास्को डा गामा। 1948 रे कालीकोट रे किए रिच करथिला ना भास्को डा गामा। कालीकोट रे 1498 रे कालीकोट रे किए रिच करथिला ना भास्को डा गामा। 1498 कालीकोट भास्को डा गामा। 1498 कालीकोट भास्को डा गामा। जामोरिन रूलर किए द रूलर ऑफ कालीकोट। जामोरिन किए द रूलर ऑफ कालीकोट। जामोरिन किए द रूलर ऑफ कालीकोट। Which Portuguese governor captured Goa in 1510? 1510 रे क्यों गवर्नर पोर्तुगीज रो जे कि गोवा कैप्चर करथिले ना अफोंसो डी अल्बुक्यूर्क्यू। पोर्तुगीज गवर्नर जे कि गोवा कैप्चर करथिले 1510 रे ना अफोंसो डी अल्बुक्यूर्क्यू। फोर्ट विलियम एट कोलकाता क्यों यूरोपियन कंपनी एस्टाब्लिश करथिले? द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फोर्ट विलियम एट कोलकाता क्यों यूरोपियन कंपनी एस्टाब्लिश करथिले? ना इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश सेटलमेंट डेवलप्ड एंड अराउंड फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज पाखरे ब्रिटिश सेटलमेंट क्यों प्रकार ब्रिटिश सेटलमेंट डेवलप होता ना माद्रास ब्रिटिश सेटलमेंट डेवलप्ड अराउंड फोर्ट सेंट जॉर्ज। और फोर्ट विलियम रे को ब्रिटिश सेटलमेंट ना कोलकाता ब्रिटिश सेटलमेंट। फोर्ट विलियम रे कोलकाता ब्रिटिश सेटलमेंट। बॉम्बे कैसल रे बॉम्बे ब्रिटिश सेटलमेंट। बॉम्बे कैसल रे बॉम्बे ब्रिटिश सेटलमेंट। फोर्ट विलियम कोलकाता। द जमींदारी ऑफ कोलकाता सूता नीति एंड गोविंदपुर किए ग्रांट करथिला? द मुगल अथॉरिटीज इन बेंगल। जमींदारी ऑफ कोलकाता सूतानुती एंड गोविंदपुर एटा किए ग्रांट करथिला ना मुगल अथॉरिटीज इन बेंगल। Which Mughal emperor gave 1717 farmland to English East India Company? क्यों मुगल एम्परर जे कि 1717 फार्मेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देइथिले ना फारूक सियार। What was the main importance of फारूक सियार फारमैन ऑफ 1717? फारूक सियार फारमैन ऑफ 1717 रो मेन इंपोर्टेंस होची इट ग्रांटेड ट्रेडिंग प्रिविलेज टू द इंग्लिश कंपनी। फारूक सियार फारमैन ऑफ 1717 होची इंपोर्टेंस होची इट ग्रांटेड ट्रेडिंग प्रिविलेज टू द इंग्लिश कंपनी। Which battle made the company the real power in Bengal? बेंगाल रे रियल पावर को कंपनी रो बैटल द्वारा होता ना बैटल ऑफ प्लासी द्वारा ब्रिटिश रो पावर आसला बेंगाल रे।
Which battle confirmed British supremacy over Bengal, Bihari and Odisha? Battle of Buxar. Battle of Buxar confirm कला जे British supremacy which Bengal, Bihar and Odisha. Who was the Nawab of Bengal at Plassey? Plassey युद्ध बेले बेंगाल राजा किए थिले सिराज उदौला. बेंगाल प्लासी युद्ध पर नवाबर राजा थिले सिराज उदौला. Who were the allies defeated by Buxar? Mir Qasim, Suz Udola and Shah Alam II. Buxar 2 रे डिफिटेड होइतिबा allies माने होचंदी मीर कासिम, सुज उदौला, शाह आलम II. What is Diwani? Right to revenue, right to collect revenue. Diwani. Who granted Diwani of Bengal, Bihar, Odisha to the company? Shah Alam II. Who granted Diwani of Bengal, Bihar, Odisha? होचंती Shah Alam II. What was dual government in Bengal? Dual government in Bengal कौन? Company control of revenue with Nawabi responsibility of for administration. Dual government in Bengal होची company control of revenue with Nawabi responsibility for administration. Which European power was finally defeated by the English Carnatic War? The French. क्यों यूरोपियन पावर डिफिट होइथिला ना कोन इंग्रेजी मानकर कार्नाटिक वार्स रे ना द फ्रेंच. Which battle ended French hopes of political domination in India? British wounded was. फ्रेंच हॉप्स को क्यों बैटल एंड करथिला जोटा कि इंडिया पॉलिटिक्स डोमिनेशन करथिला? बैटल ऑफ वांडी वास. फ्रेंच गवर्नर इन्वॉल्वड इन कार्नाटिक राइवलरी एटा होची ड्यूप्लेक्स. फ्रेंच गवर्नर इन्वॉल्वड इन द कार्नाटिक राइवलरी होची ड्यूप्लेक्स. थर्ड कार्नाटिक वार होची ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763. थर्ड कार्नाटिक वार होची को ट्रीटी ना ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763. किए इंट्रोड्यूस करथिला परमानेंट सेटलमेंट इन बेंगल ना लॉर्ड कॉर्नवालिस. बेंगल रे परमानेंट सेटलमेंट किए इंट्रोड्यूस करथिला ना लॉर्ड कॉर्नवालिस. Permanent settlement recognized whom was land owners. Land owners बोले किए रिकॉग्नाइज हुई थी परमानेंट सेटलमेंट रे ना जमीदार माने परमानेंट लैंड ओनर्स भावरे नियोजित होइथिले. रियोतवारी सेटलमेंट वाज मेनली एसोसिएटेड विथ व्हिच रीजन? मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसीज. रियोतवारी सेटलमेंट को रीजन ना मद्रास बॉम्बे रेसिडेंसी. Who was strongly associated with रियोतवारी सेटलमेंट? थॉमस मुनरो. रियोतवारी सेटलमेंट रे स्ट्रांगली एसोसिएटेड होइथिले थॉमस मुनरो. महलवारी सेटलमेंट was mainly introduced in which region? North Western provinces and parts of Punjab. महलवारी सेटलमेंट को रीजन रे इंट्रोड्यूस होइथिला ना नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब. महलवारी सेटलमेंट की एसोसिएट करथिला होल्ट, मैकेंजी एंड आरएम बार्ड. महलवारी सेटलमेंट की एसोसिएट करथिला होल्ट, मैकेंजी एंड आरएम बार्ड. रियोतवारी सिस्टम रेवेन्यू वाज सेटल्ड डायरेक्टली विथ हुम? रियोतवारी सिस्टम रेवेन्यू का द्वारा डायरेक्टली सेटल होइथिला ना द कल्टिवेटर
और रियोत कल्टिवेटर किंबा रियोत मानक द्वारा रियोतवारी सिस्टम रेवेन्यू सेटल होता। महलवारी सिस्टम एडा रेवेन्यू का द्वारा सेटल होता ना विलेज कम्युनिटी और महलवारी सिस्टम रेवेन्यू was settled by the village community or महल। फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस होची राजा राम मोहन रॉय। फादर ऑफ द इंडियन रेनाइसेंस होचंती राजा राम मोहन राय। हु कैंपेन्ड स्ट्रांगली अगेंस्ट सती राजा राम मोहन राय। हु कैंपेन्ड स्ट्रांगली अगेंस्ट सती होचंती राजा राम मोहन राय। हिंदू कॉलेज रो जोटा कि कलकत्ता रे अच्छी तार फाउंडर किए ना डेविड हारे एंड इंडियन रिफॉर्मर्स। हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता रो फाउंडर होचंती डेविड हारे एंड इंडियन रिफॉर्मर्स। हु लेड यंग बेंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो। यूथ बेंगाल मूवमेंट को लीड किए करथिला हेनरी विवियन डेरोजियो। मोटो ऑफ आर्य समाज बैक टू द वेदास। मोटो ऑफ आर्य समाज कौन थिला बैक टू द वेदास। अलीगढ़ मूवमेंट फाउंडर होचंती सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट फाउंडर होचंती सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों इंस्टीट्यूशन द्वारा डेवलप इंस्टीट्यूशन द्वारा डेवलप होता ना मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज डेवलप होता कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज डेवलप होता कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सत्य सदक समाज एटा फाउंडर किए ज्योतिबा फुले। सत्य सदक समाज फाउंडर किए ज्योतिबा फुले। वोमेन एजुकेशन इन महाराष्ट्र किए रिफॉर्मर सावित्रीबाई फुले। वोमेन्स एजुकेशन महाराष्ट्र रिफॉर्मर किए ना सावित्रीबाई फुले। विडो रिमैरेज एसोसिएशन फाउंडर किए विष्णु शास्त्री पंडित। विडो रिमैरेज एसोसिएशन रो फाउंडर होचंती विष्णु शास्त्री पंडित। हिंदू विडो रिमैरेज एंड एजुकेशन इन बेंगाल किए काम करथिला ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू विडो मैरिज आउ एजुकेशन इन बेंगाल किए काम करथिला ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सेवा साधन के फाउंडर बेरामजी मालाभरी। सेवा सदन फाउंडर किए बेरामजी मालाभरी। आर्य महिला समाज फाउंडर किए पंडिता रामाबाई। आर्य महिला समाज फाउंडर किए पंडिता रामाबाई। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन इन बॉम्बे फाउंडर किए B.R. शिंदे। द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन इन बॉम्बे रो फाउंडर किए B.R. शिंदे। नारायण गुरु इन केरला मूवमेंट रो को मूवमेंट सेटा SNDP मूवमेंट। हाँ सॉरी SNDP मूवमेंट को किए लीड करथिला ना नारायण गुरु फ्रॉम केरला। SNDP मूवमेंट को किए लीड करथिला नारायण गुरु कोडी केरला। नारायण गुरु फेमस सोशल मेसेज होची वन कैस्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैन। नारायण गुरु फेमस सोशल मेसेज होची वन कैस्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैनकाइंड। हु वाज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया होची दादाभाई नारोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया होचंती दादाभाई नारोजी। ड्रेन थ्योरी सिस्टमेटिकली फास्ट यूज्ड बाय हु होची दादाभाई नारोजी से यूज करथिले ड्रेन थ्योरी सिस्टमेटिकली। स्वराज इज माय बार्थ राइट
एंड आई शैल हैव इट किए कहिथिला बाल गंगाधर तिलक स्वराज इज माय बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट किए कहिथिला बाल गंगाधर तिलक पंजाब केसरी का कहती लाला लाजपत राय पंजाब केसरी का कहती लाला लाजपत राय लायन ऑफ पंजाब का कहती एटा मध्य लाला लाजपत राय लायन ऑफ पंजाब कहती लाला लाजपत राय देश बंधु चित्तरंजन दास देश बंधु क्या कहती चित्तरंजन दास लोकमान्य होचंती बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य होचंती बाल गंगाधर तिलक फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल्ला गफर खान फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल्ला गफर खान नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस महामन्न मदन मोहन मालवीय महामन्न का कहती मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फाउंडर किए मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फाउंडर मदन मोहन मालवीय जामिया मिलिया इस्लामिया एडार फाउंडर किए ना नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर इंक्लूडिंग मौलाना मोहम्मद अली एंड हकीम अजमल खान जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 रो फाउंडर किए ना नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर इंक्लूडिंग मौलाना मोहम्मद अली एंड हकीम अजमल खान which organization linked with काकोरी ट्रेन एक्शन ना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्यों ऑर्गेनाइजेशन लिंक होइथिला काकोरी ट्रेन एक्शन सहित ना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन who threw bombs in Central Legislative Assembly 1929 किए बॉम्ब फेंकी थिला सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1929 ना भगत सिंह एंड बाटुकेश्वर दूत भगत सिंह एंड बाटुकेश्वर दूत कौन बॉम्ब फेंकी थिले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रे 1929 रो कि असासिनेट करथिला सौंदर्स इन लाहौर भगत सिंह राजगुरु एसोसिएट्स कि असासिनेट करथिला सौंदर्स इन लाहौर होचंदी भगत सिंह राजगुरु एंड एसोसिएट्स चितागोंग आर्मरी रेड किए लीड करथिला सूर्या सेन चितागोंग आर्मरी रेड किए लीड करथिला सूर्या सेन मास्टरडा किए का कहती सूर्या सेन को मास्टरडा बोली कहती अभिनव भारत किए फाउंड करथिला ना बीडी सावरकर एंड गणेश सावरकर अभिनव भारत को किए फाउंड करथिला ना बीडी सावरकर आउ गणेश सावरकर which revolutionary society was found in Bengal by Aurobindo and associates which revolutionary society was found in Bengal by Aurobindo and associate which अनुशीलन समिति अरविंद बेंगल जो फाउंड होता रेवोल्यूशनरी सोसाइटी का द्वारा ना अनुशीलन अरविंद द्वारा एटा को ये सोसाइटी सहित एसोसिएट होइछि ना अनुशीलन समिति अरविंद व्हिच पार्टीज पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर गदर पार्टी क्यों पार्टी न्यूज़पेपर पब्लिश करथिला गदर ना गदर पार्टी हु ट्राइड टू रीऑर्गेनाइज एन इंडियन आर्मी टू एक्साइल ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 होछि राजा महेंद्र प्रताप एंड एसोसिएट वर्ल्ड वार 1 रे इंडियन आर्मी सहित ऑर्गेनाइज करिया पे किए ट्राई करथिला ना राजा महेंद्र प्रताप एसोसिएट्स हु फाउंडेड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन ईस्ट एशिया रस बिहारी बोस हु फाउंडेड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन ईस्ट एशिया होचंदी रास बिहारी बोस which case was connected with the मुजफ्फरपुर bomb incident na Alipur Bombay case which case was connected with the मुजफ्फरपुर bomb incident also Alipur Bombay case
Who was targeted in the Muzaffarpur bomb case? George Kingsford. मुजाफर बम केस रे किए टार्गेट होइथिला ना जॉर्ज किंग्सफोर्ड. हु वर एग्जीक्यूटेड फॉर काकोरी केस ना राम प्रसाद बिस्मिल, आसफ गुला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी. काकोरी केस रे एग्जीक्यूटेड किए किए होइथिले ना राम प्रसाद बिस्मिल, आसफ गुला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी. youngest martyr linked with Muzaffarpur bomb case होचंदी खुदीराम बोस. youngest martyr linked with Muzaffarpur bomb case होचंदी खुदीराम बोस. भगत सिंह co-executed. Who was Bhagat Singh co-accused executed with him? Rajguru Sukhdev. Which slogan which associated with Bhagat Singh? Bhagat Singh रो स्लोगन होची इनकलाब जिंदाबाद. भगत सिंह को कहते इनकलाब जिंदाबाद. Who popularized वंदे मातरम थ्रो आनंद मट्टो? बंकिम चंद्र चटर्जी. वंदे मातरम थ्रो आनंद मट्टो होची बंकिम चंद्र चटर्जी. इंडिया हाउस इन लंडन होचंदी श्यामजी कृष्णा वर्मा. इंडिया हाउस इन लंडन होचंदी श्यामजी कृष्णा वर्मा. गांधी फास्ट सत्याग्रह इन इंडिया होची चंपारण. गांधी करो फास्ट सत्याग्रह होची चंपारण. हु इनवाइटेड गांधी टू चंपारण होची राजकुमार शुक्ला. Who invited Gandhi to Champaran होचंदी राजकुमार शुक्ला. Which ashram did Gandhi established near Ahmedabad? Sabarmati ashram. Which ashram did Gandhi establish near Ahmedabad? Sabarmati ashram. What was the immediate cause for suspending non-cooperation movement? non-cooperation movement रे immediate cause कौन suspending रो ना चोरी चोरा violence. non-cooperation movement रो immediate cause कौन ना चोरी चोरा violence. What was the symbol of civil disobedience movement 1930? Salt law violation. सिंबल कौन थिला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रो 1930 रे सॉल्ट लॉ वायलेशन. गांधी कोड स्टार्ट करथिले दांडी मार्च ना साबरमती आश्रम. गांधी कोड स्टार्ट करथिले दांडी मार्च ना साबरमती आश्रम. दांडी मार्च एंड कोडी होइथिले ना दांडी ऑन द गुजरात कोस्ट. गुजरात कोस्ट रे दांडी मार्च एंड होइथिला. हु वाज फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही इन 1940 रे फर्स्ट इंडियन सत्याग्रही किए ना विनोबा भावे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही इन 1940. सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही होचंती जवाहरलाल नेहरू. सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही होचंती जवाहरलाल नेहरू. क्वाइट इंडिया स्लोगन करो कौन डू और डाई. क्वाइट इंडिया स्लोगन कौन डू और डाई. Which movement was withdrawn after Chauri Chaura? Non-cooperation movement. Which movement was drawn after Chauri Chaura? Non-cooperation movement. Which part ended the civil disobedience movement temporarily in 1931? Was a Gandhi-Irwin Pact. Civil disobedience movement temporarily closed in 1931. Which pact na Gandhi-Irwin Pact end द्वारा. Which conference did Gandhi attended in London? Na second round table conference. Gandhi attended in London होचंदी second round table conference. Which ashram was linked to Gandhi's constructive program?
Sabarmati Ashram and later Sevagram. Which ashram was linked to Gandhi's constructive program was Sabarmati Ashram and later Sevagram. What did Gandhi called untouchables? Horizon. Gandhi called untouchables to horizon. Which weekly did Gandhi start for anti-untouchability work? Horizon. Which weekly did Gandhi start for anti-untouchability work? Hochi Horizon. Which movement made Patel known as Sardar? सरदार को पटेल बोली क्यों मूवमेंट रे कह जाए ना बरदली सत्याग्रह रे सरदार को पटेल बोली कहगला तापर व्हिच कांग्रेस सेशन राटिफाइड गांधी यूरोइन पैक्ट ना कराची सेशन 1931 क्यों कांग्रेस सेशन टा गांधी यूरोइन पैक्ट सहित राटिफाइड होइछि ना कराची सेशन 1931 हु हेडेड साइमन कमिशन ना सर जॉन साइमन किए साइमन कमिशन को हेड करथिले ना सर जॉन साइमन साइमन कमिशन बॉयकटेड कौन पाई ना इट हैड नो इंडियन मेंबर साइमन कमिशन कहीं बॉयकट है ना ये कौन सी इंडियन मेंबर नथिले द नेहरू रिपोर्ट कमिटी मोतीलाल नेहरू चेयर करथिले नेहरू रिपोर्ट कमिटी रे चेयरपर्सन होचंती मोतीलाल नेहरू द नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेड कौन रिकमेंड करथिले ना डोमिनियन स्टेटस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नेहरू रिपोर्ट रिकमेंड कौन करथिले ना डोमिनियन स्टेटस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हु अनाउंस द कम्युनल अवार्ड को किए अनाउंस करथिले रामसे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किए करथिले रामसे मैकडोनाल्ड बिटवीन हुम वाज द पूना पैक्ट साइंड महात्मा गांधी B.R. अम्बेडकर पूना पैक्ट को किए साइन करथिले महात्मा गांधी हाउ B.R. अम्बेडकर what did the Pune Pact replace depressed classes separate electorates with reserved seat in joint electorates what did the Pune Pact replace depressed classes होची separate electorates with reserved seat in joint electorates कैबिनेट मिशन को किए लीड करथिले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन को लीड किए करथिले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस व्हिच प्लान प्रपोज्ड पार्टीशन ऑफ इंडिया होची माउंटबेटन प्लान व्हिच प्लान प्रपोज्ड पार्टीशन ऑफ इंडिया होची माउंटबेटन प्लान हु वाज द फर्स्ट हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 1946 जवाहरलाल नेहरू who was the first head of the interim government of 1946 होची जवाहरलाल नेहरू what was the diarchy under 1919 act diarchy होची division of provincial subject into reserved and transferred list diarchy 1919 act होची division of provincial subject into reversed and transferred list what did the 1935 act introduce provinces होची provincial autonomy 1935 act introduce provinces होची provincial autonomy कि ऑल इंडिया फेडरेशन which act प्रपोज करथिला क्यों एक्ट ऑल इंडिया फेडरेशन रो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होची ऑल इंडिया फेडरेशन एक्ट प्रपोजल व्हिच एक्ट क्रिएटेड बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 व्हिच एक्ट क्रिएट बाई बीच कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 व्हिच एक्ट एंडेड कंपनी रूल होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंपनी रूल को कूड़ा एंड करथिला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 व्हिच एक्ट मेड क्राउन डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्यों एक्ट क्राउन मेड द क्राउन आउट डायरेक्टली
responsible for India hoची Government of India Act 1858. Which reform is also known as Montagu Chelmsford reforms hoची Government of India Act 1919. Montagu Chelmsford reforms hoची Government of India Act 1919. Which reform is also known as Minto Morley reforms hoची Indian Council Act 1909. Minto Morley reforms hoची Indian Council Act 1909. Which act was the longest British statute on India before independence? Government of India Act 1935. Longest British statute of India before independence hoची Government of India Act 1935. Which mission proposed a constituent assembly in 1946 होची कैबिनेट मिशन. को मिशन प्रपोज रही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 रे होची कैबिनेट मिशन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट केबे ना 9 डिसेंबर 1946. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट केबे ना 9 डिसेंबर 1946. हु वाज टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होचंती सचिदानंद सिन्हा. टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होचंती सचिदानंद सिन्हा. हु बिकम परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होचंती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होचंती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. हु चेयर्ड द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होचंती B.R. आंबेडकर. ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होची B.R. आंबेडकर. हु गेव स्लोगान दिल्ली चलो होचंती सुभाष चंद्र बोस. दिल्ली चलो स्लोगान देचंती सुभाष चंद्र बोस. हु गेव स्लोगान जय हिंद होचंती पॉपुलराइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस इन INA. जय हिंद रो स्लोगान किए देथिला ना पॉपुलराइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस. हु फर्स्ट फॉर्म्ड द INA 1942? मोहन सिंह. हु फर्स्ट फॉर्म्ड द INA in 1942 होची मोहन सिंह. हु रिकॉग्नाइज्ड एंड लीड द INA फ्रॉम 1943 होची सुभाष चंद्र बोस. INA फ्रॉम 1943 होची सुभाष चंद्र बोस. 42 रे मोहन सिंह, 43 रे सुभाष चंद्र बोस. 42 रे मोहन सिंह, 43 रे सुभाष चंद्र बोस. Where was the provisional government of Free India proclaimed? Singapore. Provisional government of Free India proclaimed होची Singapore. What were the INA trials held at Red Fort, also called in INA Red Fort trial? INA trial held at Red Fort called INA Red Fort trial. Who announced the Direct Action Day होची मुस्लिम लीग. डायरेक्ट एक्शन डे होची अनाउंस किए करथिले मुस्लिम लीग. When was the Direct Action Day observed होची 16 August 1946. Direct Action Day observed in 16 August 1946. Who was the British Prime Minister at the time of Indian independence? British Prime Minister at the time of Indian independence होचंती Clement Attlee. First Governor General of Independent India होचंती Lord Mountbatten. First Governor General of Independent India होचंती Lord Mountbatten. Who was the first Indian Governor General of India? C. Raja Gopalachari. First Indian Governor General of India होचंती C. Raja Gopalachari. Who became the first Prime Minister of Independent India होचंती Jawaharlal Nehru. First Prime Minister of Independent India होचंती Jawaharlal Nehru. First Home Minister of Independent India होचंती Sardar Vallabhbhai Patel. First Home Minister of Independent India होचंती Sardar Vallabhbhai Patel. Which boundary commission
डिवाइडेड पंजाब एंड बेंगल रेड क्लिफ कमिशन क्यों बाउंड्री कमिशन कौन विभाजन करथिला डिवाइड करथिला ना पंजाब और बेंगल को ना रेड क्लिफ कमिशन हु चेयर्ड द बाउंड्री कमिशन इन 1947 साइरिल रेड क्लिफ किए चेयर पर्सन थिले बाउंड्री कमिशन 1947 ना साइरिल रेड क्लिफ ऑन व्हिच डेट डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट 15 August 1947 on which date did India become independent 15 August 1947 who defeated Tipu Sultan in 4th Anglo-Mysore War the British alliance under Lord Wellesley defeat करथिले किए कागो टिपू सुल्तान को 4th Anglo-Mysore War रे लॉर्ड वेल्सले डिफीट करथिले काकू टिपू सुल्तान को केबे ना 4th Anglo-Mysore War इन व्हिच वार डिड टिपू सुल्तान डाई ना 4th Anglo-Mysore War तो 3rd Anglo-Mysore War होची ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम एंड हेतिला क्यों ट्रीटी एड होता 3rd Anglo-Mysore War रे ना ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम हु वाज नोन एज टाइगर ऑफ माइसोर होचंती टिपू सुल्तान टाइगर ऑफ माइसोर होचंती टिपू सुल्तान हु फाउंडेड द किंगडम ऑफ माइसोर as a major power before टिपू हैदर अली किंगडम ऑफ किए फाउंड करथिला ना किंगडम ऑफ माइसोर गोटे मेजर पावर अटे टिपू सुल्तान को पूर्वर ना हैदर अली व्हिच मराठा लीडर साइंड ट्रीटी ऑफ बासेन बाजीराव टू क्यों मराठा लीडर साइन करथिला ट्रीटी ऑफ बासेन बाजीराव टू व्हिच ट्रीटी ब्रॉट पेशवा अंडर सब्सिडरी अलायंस क्यों ट्रीटी ब्रॉड करथिला पेशवार सब्सिडरी अलायंस रूल अंडर ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 कौन ट्रीटी पेशवा सब्सिडरी अलायंस व्हिच सिख रूलर बिल्ड पावरफुल किंगडम इन पंजाब महाराजा रंजीत सिंह क्यों सिख रूल बिल्ड करथिले पावरफुल किंगडम इन पंजाब महाराजा रंजीत सिंह which were led to the annexation of Punjab होचंती सेकेंड एंग्लो सिख वार क्यों वारटा लीड करथिला annexation of पंजाब ना सेकेंड एंग्लो सिख वार which policy was used to annex Jhansi, Satara and Nagpur ना doctrine of Lapse Dalhousie Condore which policy was used to annex Jhansi, Satara and Nagpur होचंदी doctor of Lapse which state was annexed by Dalhousie on ground of misgovernment होचंदी अवध क्यों स्टेट डा annexed by Dalhousie on grounds of misgovernment होचंदी होची अवध who introduced the covenanted civil सर्विस रिफॉर्म्स होचंदी लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सर्विस एग्जाम को किए रिफॉर्म करथिला ना लॉर्ड कॉर्नवालिस द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेस होचंदी लॉर्ड कॉर्नवालिस द पुलिस सिस्टम ऑन मॉडर्न लाइन इन बेंगल होचंदी लॉर्ड कॉर्नवालिस द पुलिस सिस्टम ऑन मॉडर्न लाइन्स इन बेंगल होचंदी लॉर्ड कॉर्नवालिस हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया होचंती लॉर्ड रिफॉन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होचंती लॉर्ड रिफॉन हु अपॉइंटेड द हंटर कमिशन ऑन एजुकेशन लॉर्ड रिफॉन हंटर कमिशन ऑन एजुकेशन किए अपॉइंट करथिला ना लॉर्ड रिफॉन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एटा किए सेटअप करथिला ना अलेक्जेंडर
कनिंगहम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किए सेटअप करथिला ना अलेक्जेंडर कनिंगहम who revived the strengthened ASI during Curzon era. Lord Curzon who revived the strengthened ASI during the Curzon era होउछंती Lord Curzon. Which commission recommended police reforms after 1857 होउछंती Police Commission 1860. Which commission recommended police reforms after 1857 होउछे Police Commission 1850. Which commission examined famine policy in the 1880s होउछे Famine Commission. Which commission examined famine policy in the 1880s होउछे Famine Commission. Which viceroy created Northwest Frontier Province? Lord Curzon. क्यों viceroy created Northwest Frontier Province होउछंती Lord Curzon. Drain theory कौन? The idea that Britain drained India's wealth without adequate return. Drain theory कौन नहीं? Ideal that Britain drained India's wealth without adequate return. India को लूटी न ले ब्रिटिश माने एडा का drain theory. Who popularized the concept of economic drain? दादाबाई नारोजी. दादाबाई नारोजी प्रपोज करथिले गोटे कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ड्रेन. व्हाट वाज द डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन इन colonial India? Declining of traditional Indian handicrafts under colonial rule. De-industrialization in colonial India कौन ना decline of traditional Indian handicrafts under colonial rule. What was commercialization of agriculture? Growing crops for market rather than subsistence due to colonial economy. Commercialization of agriculture कौन ना growing crops for market rather than subsistence due to colonial economy. What did the permanent settlement cause for many peasants होचे increased जमींदारी exploitation and rigid revenue demand. What is the permanent settlement cause for many peasants होचे increased जमींदारी exploitation and rigid revenue demand. Which crop was central to the Indigo revolt? Which crop was central to the Indigo revolt होचे indigo. Which export crop became linked with Deccan peasant indebtedness? Cotton. Which export crop become linked with Deccan peasants indebtedness होचे cotton. Which infrastructure helped colonial trade and control after 1853 होची railways. Which infrastructure helped colonial trade and control after 1853 होची railways. Who is linked with 1835 English Education Minute? Who is linked with 1835 English Education Minute? Thomas Babington Macaulay. Who linked with 1853 English Education Minute होची Thomas Babington Macaulay. Which dispatch is called the Magna Carta of English Education in India? Woods Dispatch. Woods Dispatch को कौन थी Magna Carta in English Education in India. Woods Dispatch Magna Carta. Woods Dispatch Magna Carta. Which university were re-established in 1857? होची Calcutta, Bombay, Madras University. Which universities were established in 1857
आंसर होची कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटी। हु फाउंडेड बेथ्यून स्कूल, JED बेथ्यूने। बेथ्यूने स्कूल को किए फाउंड करथिला ना JED बेथ्यूने। Which act restricted vernacular newspaper in 1878 होची vernacular press act। Which act restricted vernacular newspaper in 1878 होची vernacular press act। Who replaced the vernacular press act? Lord Ripon। Who repealed the vernacular press act? Lord Ripon। Which newspaper became English overnight to avoid the vernacular press act? Amrita Bazar Patrika। Which newspaper became English overnight to avoid the vernacular press act होची अमृतसर बाजार पत्रिका। Which commission studied India education in 1882? Which commission studied Indian education in 1882? हंटर कमिशन। 1882 रे क्यों जे इंडियन एजुकेशन क्यों ऊपर स्टडी करा जायतिला ना हंटर कमिशन। Who led the Santal rebellion? सिद्धू कानू। सांताल रेबेलियन को किए लीड करथिला ना सिद्धू एंड कानू। हु लेड द मुंडा उलगुलान? बिरसा मुंडा। मुंडा उलगुलान होचंदी बिरसा मुंडा। Which rebellion is associated with Elluri Sitaram Raju? Rampa rebellion। Which rebellion is associated with Alluri Sitarama Raju होची रामपा rebellion। Which Bengal peasant movement opposed indigo planters? Indigo revolt। Which Bengal peasant movement opposed indigo planters होची indigo revolt। Which play exposed indigo planters operation? नील दर्पण। Which play exposed indigo planters operations होची नील दर्पण। Which movement demanded तेबागा share of sharecroppers? तेबागा movement। Okay. Which movement demanded Tebaga share for sharecroppers होची Tebaga movement? Which movement in Kerala involved agrarian communal tensions in 1921? Which movement in Kerala involved agrarian and communal tension in 1921 होची Mopla rebellion। Which movement Kerala involved agrarian communal tension in 1921 होची Mopla rebellion। Which riots of 1875 targeted money lenders in Maharashtra? Which riots of 1875 targeted money lenders in Maharashtra होची Deccan riot of 1875 targeted money lenders in Maharashtra। Which textile strike brought Gandhi into labor disputes in 1918? Which textile strikes brought Gandhi into labor dispute in 1918? Ahmedabad mill strike। Who founded the All India Trade Union Congress in 1920 as president? Lala Lajpat Rai। Who founded the All India Trade Union Congress in 1920 as president होचंदी Lala Lajpat Rai। Which organization represented yearly national trade unionism?
Which organization represent yearly national trade unionism? Which party engaged formally in India in the 1920s around communist politics? Which party emerged formally in India in the 1920s around communist politics? Communist Party of India. Communist politics होची Communist Party of India 1920. ठीक है. Which conspiracy case targeted communist and trade union leaders in 1929? Which conspiracy case targeted communist and trade union leaders in 1929? Meerut conspiracy case. Who was the first woman president of the Indian National Congress? Annie Besant. Annie Besant होचंदी first woman president of Indian National Congress. Who was the first Indian woman president of Congress? होचंदी Sarojini Naidu. Who was the first Indian woman president of Congress? होचंदी Sarojini Naidu. Who led the Salt Satyagraha raid on Dharsana after Gandhi's arrest? Sarojini Naidu and other. Who led the Satyagraha raid on Dharsana after Gandhi's arrest? Sarojini Naidu and others. Who unfurled the Congress flag at Gwalior Tank in 1942? Aruna Asaf Ali. Who unfurled the Congress flag at Gwalior Tank in 1942? Arun Asaf Ali. Who was known for underground radio during Quiet India movement? Usha Mehta. Usha Mehta को underground radio कहते कहते Quiet India movement बेले Usha Mehta underground radio. Who commanded the Rani of Jhansi regiment of INA? Lakshmi Sehgal. Who commanded the Rani of Jhansi regiment of INA? होचंदी Lakshmi Sehgal. Who was the prominent woman revolutionary in the Chittagong movement? Priti Lata Vadekar. Who was a prominent woman revolutionary in the Chittagong movement? होचंदी Priti Lata Vadekar. तापरे who was the Irish origin disciple of Vivekananda active in Indian nationalism? होचे Sister Nivedita. Who was the Irish origin disciple of Vivekananda active in Indian nationalism? होचंदी Silver Nivedita. Sorry, Sister Nivedita. Where was India House located? होचे London. Indian House could locate is na London thare. Who published the Indian sociologist Shyamji Krishna Verma? Who published the Indian sociologist होची Shyamji Krishna Verma? Who assassinated Curzon Whaley in London? होची Madan Lal Dhingra. Who assassinated Curzon Whaley in London? होची Madan Lal Dhingra. Who founded the Berlin Committee during World War I? होचंदी Indian revolutionaries in Germany. Berlin Committee को किए फाउंड करथिला World War I रे नाम Indian revolutionaries in Germany. Who was associated with Ghadar movement in America? होचंदी लाला हरदयाल. गदर मूवमेंट इन अमेरिका रे किए एसोसिएट होइतिला ना लाला हरदयाल. गदर पार्टी कोडी हेतिला ना सान फ्रांसिस्को. गदर पार्टी कोडी हेतिला ना सान फ्रांसिस्को. Which leader sought access
help for India's freedom during World War II. South Subhash Chandra Bose short axis help करथिले India's freedom during World War II. Which radio broadcast was used by Bose from abroad? होची आजाद हिंद रेडियो. सुभाष चंद्र बोस को द्वारा रेडियो ब्रॉडकास्ट थिला ना आजाद हिंद रेडियो. Where was the Muslim League founded? ना डेका ठारे मुस्लिम लीग फाउंड होइथिला. Who presided over the 1930s Allahabad session of Muslim League? होचती मोहम्मद इकबाल प्रेसिडेंट थिले 1930 अलाहाबाद सेशन रे मुस्लिम लीग रो. Which session passed Pakistan resolution? ना लाहौर सेशन of the Muslim League 1940 कौन पास रही थिला? पाकिस्तान रिजोल्यूशन. लाहौर सेशन मुस्लिम लीग 1940 पास होइथिला पाकिस्तान रिजोल्यूशन. Who coined the term Pakistan in pamphlet? होचंती चौधरी रहमत अली. पाकिस्तान को पम्फलेट कह कि किए कॉइन करथिला ना चौधरी रहमत अली. What was the Lucknow Pact? होची लखनऊ पार्ट होची कांग्रेस लीग एग्रीमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स. लखनऊ पैक्ट कौन ना कांग्रेस लीग एग्रीमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड. Which reforms introduced separate Muslim electorates? होचंती मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स 1909. क्यों रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराइथिला मुस्लिम सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट्स रे ना मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स 1909. What was the direct action day linked with? Direct action day linked with Muslim League demand for Pakistan. Direct action day linked with Muslim League demand for Pakistan. Who led the Muslim League during the final phase before partition? होचंती मोहम्मद अली जिन्ना. मुस्लिम लीग को किए लीड करथिला फाइनल फेज बिफोर पार्टीशन होचंती मोहम्मद अली जिन्ना. द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम एटा किए कहिथिले ना सुभाष चंद्र बोस. द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम एटा किए कहिथिले सुभाष चंद्र बोस. हु गिव स्लोगन डू और डाई ना महात्मा गांधी. स्लोगन डू और डाई महात्मा गांधी. द स्लोगन Simon go back the Indian nationalist during Simon Commission protest. Simon go back slogan during Indian nationalist during Simon Commission protest. Who was called the Nightingale of India? Sarojini Naidu को कहती Nightingale of India. Sarojini Naidu को कहती Nightingale of India. Who was called दीनबंधु? C.F. Andrews को कहती दीनबंधु. C.F. Andrews को कहती दीनबंधु. आंध्रा केसरी होचंती टी प्रकाशम. आंध्रा केसरी होचंती टी प्रकाशम. आयरन मैन ऑफ इंडिया होचंती सरदार वल्लभ भाई पटेल. आयरन मैन ऑफ इंडिया होचंती सरदार वल्लभ भाई पटेल. फादर ऑफ नेशन बाय सुभाष बोस होचंती महात्मा गांधी. फादर ऑफ द नेशन बाय सुभाष बोस होचंती महात्मा गांधी. क्रिप्स मिशन टू इंडिया होचंती ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर विंस्टन चर्चिल. क्रिप्स मिशन टू इंडिया होची ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर विंस्टन चर्चिल. Why did क्रिप्स मिशन फेल? होची इट्स प्रपोजल डिड नॉट सैटिस्फाई कांग्रेस एंड लीग डिमांड्स. क्रिप्स मिशन को बाय फेल होइथिला ना एटार प्रपोजल सैटिस्फाई करनथिला कांग्रेस और लीग डिमांड को. तापरे व्हाट वाज द ऑगस्ट ऑफर? ऑगस्ट ऑफर कौन ना ब्रिटिश ऑफर ऑफ एक्सपेंडेड काउंसिल एंड पोस्ट वार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन 1940. ब्रिटिश ऑफर ऑफ एक्सपेंडेड काउंसिल एंड पोस्ट वार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन 1940 होची ऑगस्ट ऑफर. सीआर फॉर्मूला कौन किए प्रपोज करथिले?
सी राजा गोपालाचारी सीआर फॉर्मूला को किए प्रपोज करते सी गोपालाचारी Which conference discussed Weibull plan? Simla conference of 1945. Weibull plan क्यों कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस होता है ना सिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 Weibull plan. Who became viceroy after Weibull? was Lord Mountbatten. Viceroy after Weibull किए थे Lord Mountbatten. Which act gave legal effect to partition and independence? Indian Independence Act 1947. Which act gave legal effect to partition and independence? Is Indian Independence Act 1947. Which provinces were partitioned 1947? Was Punjab and Bengal. Punjab and Bengal provinces were partitioned in 1947. Which princely state posed yearly ascension challenges? Hyderabad, Junagadh, Kashmir. को princely state posed yearly ascension challenges? Hyderabad, Junagadh and Kashmir. Who was responsible for integrating most princely state? Sardar Vallabhbhai Patel and V.P. Menon. किए responsible थिले for integrating most princely state? होचंती सरदार वल्लभभाई पटेल एंड वीपी मेनन. तो एतिकी पीडीएफ समाप्त है 56टा किंतु आपन को ये पीडीएफ टी शॉर्टली कंप्रेस करिकी आपन को टेलीग्राम ग्रुप रे छड़ाई दिया जाइछि. आपन सेठी जाई के हमर टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होंतु आ सेठी पीडीएफ टा डाउनलोड करके पढ़ापढ़ी करंतु. आ हमर चैनल को न्यूली विजिट करथिले हमर चैनल को सब्सक्राइब कर देबे और सांग मान सहित शेयर करदे जो द्वारा कि आम मैंने मत आ मोटिवेशन मिल आहुरी वीडियो बनैबा को. आज वीडियो एतिकी पुणी देखाबा.